Right, thank you all for coming in today regarding the 72-hour bandh call that was given by some antisocial elements. We've called this briefing just to bring you all to notice about what is the current situation there in the capital. As you can see, it's the third day of the so-called bandh call given by some progenitors, and everything is peaceful. The law and order situation is perfectly normal. We are continuously patrolling the streets. Our arrangements, police arrangements are in place. There has been no report of any arson, any violence, or any sort of damage to public property in these 3 days. The bandh call was for 72 hours. So I think it is from the progenitor side, it is till 5 a.m. tomorrow morning. So the prevailing situation has remained peaceful, is peaceful, and will remain peaceful throughout. We would also like to state some of the actions that the police has taken against the antisocial elements. We've booked around 35 people under the APOAPA and sent them to various parts of the state. But more importantly, in these trying times, we've helped around 60 to 65 people who were stranded here, who wanted to go to the railway stations, who wanted to go to the airports, or who had landed at railway stations or landed at airport and they need to come here. Even across the state borders, people from Dibrugarh or Lakhimpur had to come here and they were not feeling safe. We escorted them from those places to Itanagar also. Some medical emergencies were also reported to us, so we've sent our vehicles to help them out and send them to different medical centers. It is very important to understand for all of us that bandh really does not benefit anyone, more so the general populace, because I think you all are here, you all continue to do the work that you do every day. We are here, we also do the same work that we do every day, day in and day out. Yes, that's true that we have to deploy more personnel, but we have enough personnel on the ground to deploy. We can call for help from outside the state also. So our jobs are the same, they remain the same throughout. We also had meetings with the market welfare associations also. So what we got to know, and it's common knowledge, that whoever gets impacted the most should raise a voice against these bandhs, and those people are the common populace. Now they cannot move out, just not because there is any security issue, but because there is a fear that is inherent, and nobody is blaming them because of the times that they've seen in the past for a couple of years. But this time we are trying to bring an attitudinal transformation in the way that the police and the administration views the bandh culture, and that is why we are on the front foot asking people, requesting them to defy this, because ultimately it's the market association people who lose the money. Ultimately it is those people the common populace who want to go to different places for their daily jobs, those are getting affected. People who want to buy things from markets, who want to get things for their daily needs, those are the people who are getting affected. So I mean, it's just a thought that even the bandh callers should also think that if they want to call a bandh with the intent that they are helping some people out, I don't think that is happening. I don't see that happening. Ultimately, the common citizen for whom the bandh callers are fighting for, as is the thing that they say, the common citizen is the only person, so as to say, which is getting the most impacted. So it is my appeal, it is my request, firstly to all the bandh callers, that there are different ways to raise your demands, and the government is also ready to address your demands. So please do not try to force bandhs. I'm also referring here to the 3-day bandh that is called now, that has been called by some sections of society
they want to extend this for another 3 days. I want to appeal to them that whatever damage or whatever suffering they've caused to the common populace in these 3 days, it's out for everybody to see. So I would request them not to extend it. And the second appeal I would want to make is to the common citizens that you've suffered enough, and even if you support the bandh callers in your hearts for the issues that they are raising, this is probably not the correct way to go about it, and you are the guys who are really getting affected because of it. So I request them to come out in huge numbers for their daily needs. They can come. We've spoken to market association. They're also ready to open markets, though in a gradual way. They will do it of their own accord. We've provided them security. We've promised them that no harm shall come to them if they want to open. And same request appeal I'm putting out to the common populace also, that you can come out to the streets. Nobody's stopping you. Section 144 is in place, yes, but as I have continuously repeated, it is in place for those people who want to come out and create trouble for the general populace. For the genuine citizens of this beautiful state, there is no section 144 in place. So with this, I would like to end my so-called monologue about this press briefing, and we're open to questions. Thank you. नहीं मैम, जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन को बिगाड़ना चाह रहे हैं, हम उनको ट्रैक कर रहे हैं, और दे आर एस्केपिंग, दे आर हाइडिंग, बट कोई बात नहीं मैम, जैसे जैसे हमें उनके बारे में पता चलता रहेगा, अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन उनके लिए लिया जाएगा. मैम मैं तो अपील ही कर सकता हूँ कि वो एक्सटेंड ना करें. अगर वो एक्सटेंड करेंगे भी तो भी हमारी तरफ से सिटीजन्स को पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, और यही अपील है कि उस बंद कॉल को खुद डिफाई करें. किसी भी तरीके के कोई डर रखने की ज़रूरत नहीं है. आपने इन 3 दिन में देख ही लिया है किस तरीके का अरेंजमेंट रहा है, तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं. आइए, बंद कॉल को डिफाई कीजिए, अपने डेली के काम कीजिए. हम ये नहीं कह रहे कुछ एक्स्ट्रा कुछ कीजिए, जो भी आप दिन में अपना करते हैं, इधर उधर जाते हैं, वो कीजिए, और आपके साथ पूरा पुलिस प्रोटेक्शन रहेगा और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी. तो हम मान सकते हैं कि कल सुबह से ऑफिशियली सब चीज़ खोल जाएगा? मैम ऑफिशियली तो हमने जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो तो आज भी खुले हैं, तो कल भी कुछ ऑफिसेज खुले थे. तो फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड देयर इज़ नो बंद. अब पब्लिक के ऊपर ही है मैम, वो जब आके अपनी दुकानें खोलना चाहें या फिर बाहर आना चाहें, आराम से आ सकते हैं. कि मैम ज़रूर पासीघाट में थोड़ा बहुत इशू हुआ है. हम ये कह सकते हैं मैम कि जैसे मैंने आपको कल भी यही बताया था कि हमारा पहला काम प्रिवेंटिव पुलिसिंग का रहता है कि कोई भी ऐसा इशू हम ना होने दें. मैं अभी भी कहूँगा कि हमारा हमेशा वही एम रहेगा. लेकिन अगर कोई इशू हो जाता है, हम हर जगह प्रेजेंट हर बारी नहीं हो सकते, तो कोई अगर ऐसा इशू हो जाता है तो अप्रोप्रिएट जो भी लीगल रेमेडी है उसके लिए केसेस रजिस्ट्रेशन हर जगह किए गए हैं. लोग जो हैं जो इन्वॉल्व थे इन एक्टिविटीज़ में, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको बंद किया जाएगा. उनके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन बनता है वो लिया जाएगा. सर, रिगार्डिंग सोल्ड और उनके ऊपर जो भी सरकारी एलिगेशन अभी तक कुछ रेडी है, क्या क्या केस के ऊपर उसको लगाया गया है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या है. सोल्ड ओडम को मैम अभी हमने अपुआपा के अंडर ही सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है. सर, एक वॉइस भी काफ़ी वायरल हो रहा था, सोल्ड ओडम के ऊपर से मारा पीटा जा रहा है, तो उनके ऊपर हम जानना चाहेंगे अभी उनका हेल्थ कैसा है. पब्लिक भी काफ़ी उनका वो आवाज़ को सुन रहे हैं. आई थिंक आप उस वॉइस क्लिप की बात कर रहे हैं जिसमें कोई एक व्यक्ति है, वो असमीज़ में लखीमपुर से बोल रहा है, तेजपुर से बोल रहा है, हाँ तेजपुर से बोल रहा है, सॉरी. और वो बता रहे कि हमारे यहाँ जेल में सोल्ड ओडम है. एम आई राइट? तो मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी कि सोल्ड ओडम जो है वो हमारे ही स्टेट में है. तो पहले ही पॉइंट पे वो वॉइस क्लिप को मैं नकारना चाहता हूँ, क्योंकि वो जैसे बता रहे हैं कि वो असम में किसी जेल में है और वहाँ पे उनके साथ कुछ गलत हो रहा है. वो हमारी ही स्टेट में है, एक प्रिजन में है, और प्रिजन मैनुअल के तहत जो भी उनको फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए वो उनको दी जा रही है. उनकी हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल है. सर, पता चला है कि सोल्ड ओडम के लिए भी एक लॉयर हायर किया गया, एंड वो भी अपना
काम कर रहे हैं, तो व्हाट इफ अगर आने वाले कुछ दिन में वो अपने केस जीत जाए और सोल्डर को बाहर कर दे, तो आगे का कार्रवाई कैसे करेगा? और सोल्डर फिर दोबारा बंद को या कोई और कर देगा तो कैसे करेगा? मैम अगर उन्होंने लॉयर हायर किया है और उनके पास लीगल रेमेडी है तो वो कोर्ट जाएंगे और जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। फिर दोबारा बंद कॉल होगी और फिर हमें लगेगा कि उनका इंटेंट पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट करने का है तो फिर उन पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। सर आपकी तरफ से कल भी आपने एश्योरेंस दिया था, पब्लिक को आपने अपील किया था कि बाहर आ सकते, दुकानें खुल सकते, कुछ डिफरेंसेस तो देखने को नहीं मिला आज के दिन में, बस गाड़ियां हमने देखने को मिला था। लेकिन सर आप खुद कह रहे हैं कि फुल्ली सिक्योरिटी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आगे आकर उन्हें खुलना चाहिए। लेकिन सर पास का जैसे आपने खुद मेंशन किया कि ऐसे देख चुके हैं, तो सर कैसे वो भी आ गया है? अगर जैसे इनकेस कुछ डैमेज हो जाता है, गवर्नमेंट से कंपनसेट नहीं होता है, बंद कॉलर की तरफ से कुछ नहीं होता है, तो आप कैसे अश्योर करेंगे उन्हें कि उन्हें आगे आकर दुकानें खुल? काफ़ी अच्छा सवाल है मैम। हम जो आप कह रहे हैं कि कॉम्पनसेशन का, जनरली मैम हम ये ट्राई करते हैं, ये तो एपेक्स कोर्ट से भी हमारे पास काफ़ी इसके जजमेंट्स आ गई हैं कि ट्राइब्यूनल सेट किए जाते हैं। जब भी किसी तरीके का पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होता है तो जो भी इसको डैमेज करे उनसे ही पैसा निकाला जाता है और कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। वो वाली भी चीज़ मैम हम करेंगे। और इसके अलावा कॉन्फिडेंस आना मैम एक रात की या एक दिन की बात नहीं है। पुराने जो भी इश्यूज़ रहे हैं जिसकी वजह से डीप सीटेड कुछ इमोशंस हैं लोगों के बीच में, मैं बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हम मैम सिर्फ आगे अच्छा काम कर सकते हैं और एक हार्टफेल्ट अपील कर सकते हैं। कल भी मेरा वही अटेम्प्ट था मैम, आज भी मेरा यही अटेम्प्ट है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए और एक बार ट्राई कीजिए बाहर आने का। कुछ इश्यूज़ होते हैं तो वी आर हियर टू हैंडल दैट। सर अभी तक कितना लोग डिटेन हुआ है और उसमें से एज ग्रुप्स एनी माइनर्स? नहीं मैम, 35 लोग के आसपास हमारे अपुआपा में अभी डिटेन हुए हैं, 35 ऑल मेजर्स। आउट ऑफ देम हाउ मेनी आर लाइक मेल फीमेल? वो डिफ्रेंशिएशन मैम मेरे पास अभी नहीं है। एज पर सोर्सेस सर अरेस्टेड फॉर 37 नंबर सुनाई दिया था, तो 35 बोल रहा है। 35 है मैम, 35। सर कल से आप लोग जो बोल रहे हैं कि बाहर निकलो, दुकान खोलो, तो आपको अनाउंस करके भी घूम रहे हैं सर। तो जो रास्ते के सामने में जो दुकान है, जो मेन मार्केट है, वो लोग वहाँ नहीं रहते सर। तो आपको अनाउंसमेंट तो लोग सुनने वाला नहीं है। राइट और इंटरनेट भी नहीं है तो सर कहाँ से मिलेगा इन्फॉर्मेशन? राइट। तो हमारा यही अटेम्प्ट है कि हम सिर्फ यही नहीं बोल रहे, जो इंटीरियर एरियाज़ है वहाँ पे भी हमारा काफ़ी एलैबोरेट अरेंजमेंट है। उनको भी बोला है कि अपने पीयर्स को या जो भी लोग आते जाते हैं उनको बताया जाए। इंटरनेट नहीं है, इसकी वजह से हम जो कर सकते हैं वो है कि आपको बताएं, आप आगे बताएं, या हमारे जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको बताएं। इसी संदर्भ में जैसे मैंने पहले बताया, मार्केट एसोसिएशन के साथ भी हमने मीटिंग किया था उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए। तो इन्हीं तरीके से हम मोटिवेट करना चाह रहे हैं।